Good evening, participants. Welcome to this webinar today. Sanjiv Sir's की पाठशाला episode 2. Our episode 1 was on 3rd April, wherein specifically we talk about overall Nifty outlook. That time Nifty was trading in the range of 17,150, 17,200. Now recently we made the high of 17,800, and currently last 2-3 days there is some correction. But in last webinar, Sanjiv sir specifically said that in next 8 to 10 days, we will see upside up to 17,800 to 18,150. And we have already achieved 17,800 on last Friday, wherein we had given stocks like DLF, Godrej Properties, and we got really good response from our investors and as well as all our viewers who could earn good returns on the investment. So in this session, Sanjiv sir will talk about market for next 15-20 minutes. Then he will give you strategies on derivative side for 10 minutes, and then 10 minutes we will have small Q&A. So in Q&A, please stick to particular stocks or sectors. Don't get much deep into it, because we won't be able to answer each and every question. So we apologize for that. We have limited time. So please don't get upset with that. Whenever we answer the questions, we will try to cover all of it. And those we couldn't answer in this webinar, we will try to answer it through email. So over to Sanjiv sir. Good evening, आप सबको. और if you have been in the market, आपको 2 महीने की जो pain थी, that has got erased in this 15 days. We've had almost 1,000-point rally from the lows of last week of March, and markets, aside from the index, stocks have done extremely well. तो आपके मेरे 2 favorite थे, DLF, Godrej Property, वो new highs मार गए. Godrej is up 40% from its recent lows, 33%, and DLF is up almost 30%. तो ये बता रहा है कि participation is necessary. It is easy to give advice and say that I will time the market. Nobody could time it on the downside, neither on the upside. Now, what does the market foretell? I think we've had a very sweet rally, and arguably the disappointment was in the IT numbers and the IT guidance. But that is part and course of this, flow. अभी भी मुझे लगता है कि we have not reached the point of tops. 17,800 से 18,150 आपको मैंने गाइडेंस दी थी, और 17,850 हमने हिट कर लिया. ये 2-4 दिन की कंसोलिडेशन है. मुझे लगता है ये एक्सपायरी 18,000 के पास होगी. दूसरी बात, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है दैट इन मे वी विल हिट 18,500 and maybe more. अब उसका मतलब है that there is almost another 1,000 points on the upside, and there are 3 simple reasons. A, 16,800 जो हमने hit किया था, that was the extreme bout of pessimism. Indian markets will not be cheap, and that was the cheapness you could see because of external factors, very large amount of despair or some global events. Nowhere was India affected by SVB or the Credit Suisse fiasco. In fact, our RBI governor has been very prudent, and he did not even hike the rates. तो मुझे लगता है 16,800 may have been the bottom for some time now, and we may not visit that, and we think 17,500 is a fair level. अब जब आप 1,000 पॉइंट ऊपर जाएंगे, that will be the real bull market, because in that you will see more outperformance which we have seen in the mid caps. So I am very confident. Generally there is a saying, sell in May and go away. मुझे लगता है पहले 15 दिन मई में ही, given the backdrop of corporate results, earnings, macros, rupee, dollar, all that bodes well for the market. So I am very confident that we are going to see higher levels, maybe 18,500 before 15th of May, which means stocks and sectors like mid caps will outperform. Already you've seen stocks like DLF and Godrej Property be real outperformers. इसके अलावा आपने देखा है autos, आपने देखा है mortgage companies, and HDFC Bank has been leading from the front. Even PSU banks, particularly Bank of Baroda, which has been my top favorite, has done very well. PNB and State Bank have also joined the rally. Now that comes to the point, what are the macros? Macros आप सबको पता है that the Fed is
See, there is a simple equation which talks of a recession when the 2-year yield goes above the 10-year. The differential in both those was 110 points. It's now down to 45 basis points. वो बता रहा है कि market is pricing in that by July the Fed will start to cut rates and there can be 100 basis point of rate cut by the end of the year, which means the US dollar is going to weaken. Already we've seen the US dollar hit 100.5. It's close to 102. मुझे कोई दो राय नहीं, the US dollar is going to go to 98 और उस कारण से emerging markets will do extremely well. If you remember 4 or 5 months back, there was talk that Europe is the deepest, is the biggest elephant in the room. All European indices are hitting new highs, the CAC, the FTSE and the DAX. And that is telling us smart money has bought the dip in those markets. China has seen a huge outperformance as money went from India to other emerging markets, but now it's the return of India. और मुझे कोई दो राय नहीं that you will be surprised on the upside. So please be invested. अगर आपके डीमैट अकाउंट है उनमें चालू रखिए, सिप रखिए और ऑल अकाउंट खोलिए क्योंकि सिप्स आर यूनिवर्सल. इस मार्केट की बैकबोन इज द रिटेल इन्वेस्टर. 14,500 करोड़ का सिप इवन इन द मंथ ऑफ मार्च केम, विच टेल्स अस कि ये जो पैसा है ये रुकने वाला नहीं है और उस कारण से आपको HDFC, रिलायंस या TCS ये सस्ते नहीं मिलेंगे और because these are the blue chips or the backbone of the market. As far as foreigners go, after selling a whole lot, they've again become buyers और मुझे कोई दो राय नहीं, new money will come as ETF flows see yields fall and better strength in emerging market currencies and equities. In this, our demographics are playing to the hilt. Car sales, auto sales, and real estate. I mean, DLF sold 8,000 crore property in 1 week. तो मुझे कोई दो राय नहीं that certain stock sectors are going to outperform. Metals are a very good proxy. मैंने पिछली बार ये और आपको अभी भी पीछे कहा था कि metals लीजिए, they are a very good proxy to a falling dollar. और मैं 4-5 दिन से 2 हफ्ते से कह रहा था प्रसाद को, सारी टीम को, जब हम बाकू गए थे, metals will outperform. Metals are up almost 10% from the recent lows, and I think they will make new highs. इस दौरान there will be volatility because you must realize Infosys is a key stock owned by both foreigners and Indian mutual funds, and balancing act will see rotation of money from one to the other. Infosys guidance was weak, but the order book is very strong. So take it with a pinch of salt के Infosys कभी भी 2-3 साल में ऐसी फॉल देता है, वो एक लेने का मौका है, लेकिन आपको 2 क्वार्टर तक वेट करना है. On the other hand, metals, autos, real estate, mortgage companies, your consumption is doing extremely well. Godrej Consumer, Nestle are hitting new all-time highs, and I don't have any two things to say that demographic premium is playing very, very well. Indian Hotel has also hit a new high. Inflation का जो risk था वो mitigate हो रहा है. Now we will depend on the monsoon and the output of our soft commodities and so on, but that will be a little bit delayed. On the other hand, the inflation, particularly in the US, is showing signs of easing. आपने already 5% से भी नीचे आ गए हैं और मुझे कोई दो राय नहीं, the new readings which will come will bring inflation down to 4%, which means the Fed will have to be on hold for a long time and will start to cut rates by July. ये तो मैक्रो था. अब आपको ये करना है कि पार्टिसिपेट करना है. Whether you buy a mutual fund, you create your portfolio, you buy an AMC or a PMS, that is all on the risk appetite you have. But please make an asset class called equity in your portfolio. आप सबके पास सोना है, जमीन है और फिक्स्ड इनकम है. The missing link has been equity. और मेरे को कोई दो राय नहीं कि the next 10 years at least belong to India. तो अगर आपको यहाँ से पैसा मल्टीप्लाई करना है, equity is the best asset class against any other asset class. We are not saying your money is going to double overnight, but अगर आपको 12-13% compounded yield मिले in 4 years, you will double your money. So I think SIPs are the best instrument for passive investors. If you are active, then you will have to keep an account with IFL, और उस कारण से हम आपको हेज की भी स्ट्रैटेजी बताएंगे और मार्केट का जो वॉलिटिलिटी है उसको बर्दाश्त करना भी सिखाएंगे.
Nobody is God, but we make our best attempt to see that you get our best guidance. Our research team works very, very strongly. और आपको काफी कुछ आपको पोर्टफोलियो भी जयेश और उनके जयंत ने बना के दिया है. मुझे कोई दो राय नहीं जयनीत ने कि अभी भी we will try and give you more ideas, but please be invested. क्योंकि simply put, the bank nifty has been the real darling in the last 1.5 months. And who thought that you will be almost knocking at the door of 43,000, which is clearly telling you that an index is doing much more than stocks specifically. Because in this run, it has been more of Kotak, HDFC and ICICI Bank. और आपको याद है कोटक मेरा टॉप पिक था लास्ट सेमिनार में. अभी भी मुझे लगता है ये शुरुआत है. मेटल्स, रियलिटी, सीमेंट, मॉर्गेजेस आर गोइंग टू डू वेरी वेल. और जो हमने आपको स्टॉक सजेस्ट किए थे वो सारे रियली यहां से आउट परफॉर्म किए हैं. DLF, Godrej have taken the cake. Tata Steel, JSW, L&T, Grasim, all and Reliance, these are looking very, very strong. Reliance, JSW Steel, Ambuja Cement, Maruti and Hindalco, these are looking very, very strong. देखिए दूसरी power sector has been very, very strong. और REC, PFC as lenders have done well. NTPC recently corrected from 180 to 165, 167. NTPC is a no-brainer. It trades at less than 1 time price to book, even though the stock has doubled. But जो उनका renewable power में नया focus है, that is going to be very strong. And also, the other part is that I have been recommending a dark horse called SW Solar. SW Solar has an equity of 18 crore. It is owned 40% by Reliance Energy. They made an open offer at 375. It is the largest player in India. In the world, it's the third largest as the EPC. और आपको पता है कि anything to do with solar PVs, EPC is the biggest contract manufacturer. They are guiding for 10,000 crore order book by the next year, which means that on 12% margins, their book will be very, very strong. I think this can be a dark horse. NTPC is another stock which I've recommended. Aside from that, Bosch, Tata Motor and Escorts have been very, very strong players. और पिछली बारी आपको Escorts और Tata Motor दोनों कहे थे. Dr. Reddy, Lal Path Lab and DVs have come back into focus on the back के COVID cases have risen, but these are good variable businesses. You have to catch the theme when it plays out on certain times of price points. इस कारण से prices are supreme and you have to differentiate whether you are an investor or a trader. तो ट्रेडर को अभी भी मैं सोचता हूं इस भाव पे थोड़ा सा न्यूट्रल रहना चाहिए, क्योंकि डेली आपको राइज आता है लेकिन उसके बाद द मार्केट सीज वॉलिटिलिटी एंड एंड्स ऑन द नेगेटिव नोट. ये 2 दिन और चलेगा. नेक्स्ट वीक से मेरे हिसाब से एक न्यू ट्रेंड चलेगा where we will take out 18,150 and then we will talk about that in May. इस दौरान मैं आपको फिर बोलता हूं कि अगर आप डेरिवेटिव ट्रेडर हैं तो दोनों तरफ का मार्केट में पार्टिसिपेट होता है. ऑप्शन, हेज एंड मार्क टू मार्केट, ये 3 चीजें रखना. आपकी वैल्यू एट रिस्क क्या है, आपका मार्क टू मार्केट क्या है और आपका हेज क्या है. ये तीनों चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको गारंटी नहीं है लेकिन 95% आपका पैसा जरूर बनेगा. मैंने पिछली बारी भी सजेस्ट किया था कुछ डेरिवेटिव के बारे में. मैं आज आपको एक डेरिवेटिव की स्ट्रैटेजी देता हूं. सो what I am going to tell you is called an option calendar spread. We know that the settlements end on the last Thursday of every month. ये strategy is to be used on the last Tuesday before the settlement, meaning 2.5 दिन पहले. Tuesday को दोपहर को आपको ये strategy बनानी है और Thursday तक ये play out हो जाती है. इसमें आपने क्या करना है, it's called an option calendar spread. नियर मंथ की कॉल और पुट दोनों को आपने बेचना है. अंदाजन के लिए कि आज 17,600 का निफ्टी है तो आपने 17,600 की कॉल और 17,600 की पुट दोनों बेच दी. आपको एक रिलेटिव प्रीमियम आ गया ऑलमोस्ट 200 रुपीज. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एस्टिमेट. और सामने आपने अगले महीने की कॉल और पुट खरीद ली तो आपका रिस्क न्यूट्रल है, मीनिंग आपने नियर मंथ की बेच दी और अगले महीने की खरीद ली. तो इसमें आपको क्या होएगा, अगले महीने की जो खरीदेंगे उसके लिए कैश आउटफ्लो होएगा, लेकिन नियर मंथ की जो बेची है उसमें आपको
डेरिवेटिव पोजीशन के साथ मार्जिन लगेगा. एंड व्हाट आर यू प्लेइंग फॉर? यू आर प्लेइंग फॉर थीटा. थीटा इज के लास्ट 2.5 दिन में प्रीमियम्स विल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द नियर मंथ एंड एक्सपैंड फॉर द नेक्स्ट मंथ. नेक्स्ट मंथ के प्रीमियम्स घटेंगे नहीं और नियर मंथ के प्रीमियम्स बढ़ेंगे नहीं. और अगर आपको वो स्प्रेड मिल गया, यू कैन मेक एनीथिंग फ्रॉम 8 to 30% इन जस्ट 2.5 days. तो इसके बारे में और नॉलेज हम आपको देंगे, लेकिन एन ऑप्शन कैलेंडर स्प्रेड इज टू बी यूज्ड इन द लास्ट 2.5 days बिफोर एक्सपायरी. इट इज अ वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट. यू कैन नॉट लूज मनी. ऑन द केविएट, मार्जिन का आपको बंदोबस्त करना है. तो यू आर अगेन रीट्रेटिंग. नियर मंथ की जो ऑप्शन है, कॉल और पुट दोनों बेच सकते हैं. आइदर वे आप दोनों तरफ में से एक भी कर सकते हैं. और हेज करने के लिए अगले महीने की कॉल और पुट खरीदेंगे. अगले महीने का प्रीमियम ज्यादा है, लेकिन वो प्रीमियम घटेगा नहीं. और नियर मंथ का जो प्रीमियम है वो बढ़ेगा नहीं. तो जैसे जैसे टाइम पास आएगा, नियर मंथ के प्रीमियम और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और दूसरे मंथ के प्रीमियम्स ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो उधर ही रहेंगे. So the differential between those two will be your winning, which can be anywhere from 8 to 30%. That is called an option calendar spread. इस कारण से आपको अगर डेरिवेटिव स्ट्रेटेजी करनी है, ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, पेयर्स करने हैं, सेक्टोरल स्प्रेड्स करने हैं, आपको अकाउंट खोलना है आईएफएल के साथ. We will give you guidance. We will give you personally how to get out of positions which are not retrievable and so on. मैंने पिछली बारी भी कहा था, I will personally look after 10 accounts which are in bad position and try and give strategy. But try and use this on paper. ये मंथ की सीरीज नेक्स्ट वीक खत्म होएगी. कागज पे ट्रेड कीजिए. नियर मंथ की कॉल और पुट बेच देना, अगले मंथ की खरीदना और देखना 2.5 दिन में आपको क्या पैसा बचता है. We will do this as a trial on Tuesday. We will again suggest to you and then we will see how it plays out. अगर आपको सूट करता है, आपका टेम्परमेंट ठीक है, आपका कन्विक्शन और डिसिप्लिन है, you are bound to make money. This is just one strategy. The rest, like I told you, I am extremely positive on the market and I think 16,800 was the perils of despair. मुझे कोई दो राय नहीं. We are now headed to much higher levels. In the near term, 18,500 can come in the month of May, and we think next week onwards this consolidation will end. जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, अगर आप अकाउंट खोलेंगे आईएफएल में, we will give you more color on derivatives, how to hedge yourself, but also keep your SIPs going. Prashad and his team and our retail people are there always to serve you, and whatever queries you have, please send them a mail. Over a period of time, I will reply. आपके derivatives में भी कोई ज्ञान चाहिए हो तो we will pass it on. See, we can give you advice, we can give you knowledge. The rest, it needs a little bit of luck, but a lot of discipline to make money. That is the key. With this, I think, Prasad, we can leave it for question and answers. Thank you, sir. As usual, Sanjiv sir has enlightened us with so much of input on the market, and most importantly, he has given us one derivative strategy. Participants, if you have any question, please put in Q&A section only. Don't put anything in chat box. So, sir, first question: any view on REITs and InvITs? Yeah, I think they are very, very good investments. At a time when yields are going to come down, InvITs and REITs both can do well. But जैसे मैंने कहा, this is an instrument which is very active overseas. In India, it still is in the nursing place. और अगर आपके पास अच्छे credential वाली companies हैं, like Brookfield और ऐसे, इन्होंने बहुत अच्छे 12-13% आपको InvIT में return मिल रहा है. So do your study, do your understanding, do your footwork. But these are very good instruments which over a period of time, as yields fall, they will do well. Thank you, sir. Sir, next question is since IT index is not performing due to poor results from Infosys and TCS, and you are very much optimistic on HCL Tech. So today the result is going to be published on HCL Tech. So what's your current view on HCL Tech, sir? I think HCL Tech may buck the trend. HCL Tech की guidance, उनकी जो BFSI space है, उन्होंने पिछले क्वार्टर भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. और मुझे लगता है इन्फोसिस और टीसीएस का जो एक्सपोजर था टू यूरोप, वो थोड़ा सा एचसीएल टेक का नहीं है. दे हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद यूएस एंड देयर हेजेस आर वेरी स्ट्रांग.
I am not going to be bearish on HCL Tech. In fact, HCL Tech, Tech Mahindra and Persistent are my three top picks. मैंने पिछली बारी भी कहा था, and I will think that HCL Tech may actually surprise by some corporate event, and you could look for a reasonable rally in that stock, because आजकल सबसे ज़्यादा pessimism is in IT. Maybe Infosys set the cat, but I think HCL Tech can be an exception. Yeah, thank you, sir. Sir, next question is related to your derivative strategy. Mr. Alok Verma wants to know that as per given strategy, we sell call and put ATM strike for near month and buy ATM strike for far month. So is it correct? Yes, आपको 2.5 दिन पहले नियर मंथ की कॉल पुट बेचनी है और बाहर नेक्स्ट मंथ की खरीदनी है. नेक्स्ट मंथ में आपके पास पूरा 30 दिन है, वो प्रीमियम घटेगा नहीं, और नियर मंथ में 2.5 दिन है, वो प्रीमियम बढ़ेगा नहीं. ये लिख के ले लो आप. तो जैसे जैसे वो कॉन्ट्रैक्शन होएगा, दूसरे का भी ऊपर नीचे होएगा, लेकिन जो प्रीमियम का डिफरेंस है, that will rise in those 2.5 days, because you get 2.5 days to make that differential of premium contraction and expansion. Try it on paper. अगर आपको सूट करता है, then do it, or do it with very very small lots, so that you understand. Once you have your skin in the game, आप समझेंगे कि पैसा बनाना आसान भी है और डिसिप्लिन से जरूर बनता है, लेकिन उसमें माइंड लगाना है, स्ट्रेटजी बनानी है. Thank you, sir. Sir, what's the view on auto sector? Do we need to hold or we can get out of it? देखो प्रसाद, ऑटो हैज डन वेरी वेल, और टाटा मोटर वाज माय टॉप पिक अलोंग विद बॉश. एस्कॉट्स हैज डन वेरी वेल. 1850 वाला 2000 हो गया. मुझे अभी भी लगता है कि जिस तरह से रूरल इनकम्स एंड लोकल डेमोग्राफिक्स है, ऑटोज आर इन अ वेरी स्वीट स्पॉट. अभी भी मैं सोचता हूँ टाटा मोटर एंड मारुति कैन सरप्राइज ऑन द अपसाइड. And in two-wheelers, I think the cake has been taken by Bajaj Auto. Eicher Motor would be my other pick, but TVS, Eicher, and Bajaj. These are three stocks to own. Bosch and Motherson could be two dark horses on the OEM side. Yeah, thank you, sir. Few of the participants are saying that they are not aware about options and all. So we will have a separate session on basics as well as advanced. So you can attend it and you will come to know about it. Secondly, sir, one of our participant wants to know ethanol story is going to work from here or not? Prashad, firstly, let me clarify. मैं पहले ये 4-5 साल पहले करता था सेमिनार ऑन ऑप्शन स्ट्रेटजीज. दिस इज नॉट एन इजी इंस्ट्रूमेंट टू एक्सप्लेन. इसमें 2 दिन की पूरी सेशन लगता है. हम कोशिश करेंगे आपके साथ कोऑर्डिनेट करके कि एक जगह या बॉम्बे या कहीं जहां भी आपके साथ, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली या कहीं भी, लेकिन एक जरूर सेशन रखेंगे जहां 2 दिन का पूरा टाइम दिया जाएगा. उसमें मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस और ज्ञान है मैं सारा बांटूंगा. उसके अलावा आपको समझने में फिर भी थोड़ी मुश्किल आ सकती है, बट लेट्स मेक अ बिगिनिंग. सो वी विल, as you know, my schedules are very busy, but I will definitely in the next 1 month give you some time where we can get some of the clients who want to use this as a medium of always making money. We will give you some strategies and clear guidance on what options and derivatives are. तो derivatives strategy पे आपको एक जरूर हम सेशन देंगे. We will try and make it more widespread, more participation, but it will take 2 days. दूसरी बात आपने एथेनॉल पे कही, तो sugar prices are hitting the roof and sugar producers have never had so good. गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया एथेनॉल ब्लेंडिंग, विच मींस दैट शुगर विल रिमेन इन अ स्वीट स्पॉट. मेरे को अभी भी बलरामपुर चीनी, डीसीएम श्रीराम और ईआईडी पैरी बहुत पसंद है. प्राज इंडस्ट्री इज अ गुड प्रॉक्सी बिकॉज इट मेक्स द मशीन्स फॉर एथेनॉल ब्लेंडिंग. हाउएवर, लाइक आई सेड, ये भी सिक्लिकल इंडस्ट्री है एंड इट हैज अ लॉट ऑफ डिपेंडेंस ऑन रेन एंड अदर weather outcome. So right now these 3 are blue chips to own. We will see more color as we get through the earnings and then give you some more commentary. Thank you, sir, for announcing this kind of options seminar for all our investors as well as all our esteemed clients. And one more thing, like in last webinar, Sanjiv especially said that you have to open the account with IFL to get regular updates on our calls as well as these option strategies. तो आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा IFL के साथ अकाउंट खोलना है. Our representative will call you up for that.
अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको कॉल किया जाएगा। आपको यहाँ पे कोई भी नंबर देने की जरूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करते हुए दिया हुआ है। हमारे एंड से हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपको कॉल करेंगे और अकाउंट ओपन कीजिए, सो दैट यू विल गेट ऑल दिस डिटेल्स स्पेसिफिकली फ्रॉम संजीव सर। सर कोई एसआईपी के लिए स्टॉक्स हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं? हाँ, तो एसआईपी के लिए मैं बोलता हूँ कि देखिए, रिलायंस, जेएसडब्ल्यू स्टील, मारुति, अंबुजा सीमेंट एंड पीएनबी, ये 5 मुझे पसंद है। आप उसमें आप उसमें एक और एनटीपीसी भी ऐड कर सकते हैं। ये 5-6 लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, ये मेरे हिसाब से अच्छा करेंगे। मिड कैप्स में अभी भी मैं बॉश, डीएलएफ और गोदरेज कहूंगा, दे हैव रन अप अ लॉट। लेकिन अगर आप सिप करेंगे तो पार्टिसिपेट करेंगे। मुझे कोई दो राय नहीं कि न्यू हाइज इन प्रॉपर्टी आर शोइंग दैट देयर इज लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, और इन स्टॉक्स में जो 2 महीने पहले बहुत डिस्ट्रेस वैल्यूएशन हो गई थी। दीज आर ब्लू चिप स्टॉक्स एंड आई थिंक दे कैन डू वेल, but in a SIP I would suggest those 5-6 names which I've just given you. Yeah, thank you, sir. Sir, a few stocks like GNFC, then Occurred Pharma, Bata and all, but we need to hold or we can exit, sir. Currently it's not performing. देखिए, अभी तो कुछ बेचने का मेरा कुछ ओपिनियन नहीं है। Hold all your stocks, even IT, if it's in a weak spot, don't average it, but just hold. The market is showing you a lot of color, और अभी तो शुरुआत है, पार्टिसिपेशन ही नहीं है। प्रसाद, 18,000 के बाद ही लोग बाग रिटर्न करेंगे, और मेरे को दावा है कि we will surprise on the upside in the before the 15th of May. So I am very, very positive. I don't think there is any two ways that India's underperformance can now turn to outperformance. साथ में when global indices are hitting all-time highs, why should we be a laggard? हम एक expensive market है, but we will continue to be. GNFC is a very, very sweet place on acetic acid and the products which it makes. और मुझे लगता है specialty chemical and correlated stocks will do well. Yes, there will be the effect of the monsoon and weather pattern, but I think hold on to your portfolios. And if you want suggestions, our portfolio bhejiye, we will try and restructure those and add some names or exit some in a systematic way. Yeah, thank you, sir. Sir, anything on this financial stocks like Bajaj Finserv, then we have IDBI Bank, Yes Bank, as well as one participant wanted to know on HDFC AMC. So anything on? So Prasad, simple thing है, अगर आप इंश्योरेंस और एएमसीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अगले 2, 3, 5 साल के लिए आप सिस्टमैटिकली लेते जाइए। आपको फिक्स्ड इनकम करने की जरूरत नहीं है। एएमसी एंड इंश्योरेंस आर नो ब्रेनर्स. The type of bandwidth they have, the type of pedigree they have as an institution, HDFC, AMC, ABSL, or even Nippon, and all the insurance private, इनमें तो अभी तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जैसे जैसे म्यूचुअल फंड ग्रोथ बनेंगे, इनको तो इनकम आनी है एंड दे विल ओनली ग्रो। लेकिन क्वार्टर बाय क्वार्टर ट्रैक करना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज फ्लोज कम इन एंड आउट एंड प्रोडक्ट चेंजेस हैपन, व्हिच वाज वन ऑफ द अंडरलाइन जो सेबी ने किया ऑन फिक्स्ड इनकम टैक्सेशन विद द फाइनेंस मिनिस्ट्री डिड। ऑन द अदर नेम्स, आई थिंक Cholamandalam has been a star outperformer. The HDFC Twins merger will mean HDFC itself will be a very, very big player in the mortgage finance. और मुझे लगता है कि co-lending is doing extremely well. तो मुझे लगता है कि smaller names जहाँ पे हमने कलर नहीं देखा, like Cholamandalam or even Bajaj Finance will be in a sweet spot. ओनली थिंग, अब कंपटीशन बढ़ गया है तो बजाज फाइनेंस एंड फिनसर्व में जो एक्सट्रीम वैल्यूएशन प्रीमियम था वो एक कम हो रहा जा रहा है. सो यू विल हैव टू लुक फॉर सम मिड कैप नेम्स व्हिच हैव द सेम प्रेजेंस एंड आई विल कीप अपडेटिंग यू ऑन दोस in the near term. Thank you, sir. I think we have covered most of the questions. Any of the questions we missed, we will definitely connect with you. And those who want to open the account, we will connect with you as well. And we will try to arrange the call from the associate residing near you. So thank you very much, sir. And very soon we will arrange the seminar for options.
one of the participant based in UP want to have this kind of session for his clients, like his CS. So we will connect with you, sir. And we thankful to you. You are arranging this kind of seminar for our investors. So we will also conduct next seminar in next 10 to 15 days. By the time, as sir said, we will see new high in the, on Nifty. So thank you all the participants for patiently hearing to us. And once again, thank you, Sanjiv sir, for giving us guidance on the market and the option strategy. Thank you and wish you all the best. And remember, आप account खुलवाइए और हमारी तरफ से जो भी चेष्टा, जो भी effort है, we will put in double efforts. चाहे डेरिवेटिव हो या इक्विटी हो, आपकी पार्टिसिपेशन होगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी और हर सेमिनार में आपको मैं कुछ नया आइडिया दूंगा, नया मार्केट गाइडेंस दूंगा, जिससे आपका 1-to-1 होएगा. टीवी पे देखना छोड़िए, हमारे को फॉलो करिए, आपको और पैसा बनेगा और आपकी पार्टिसिपेशन बढ़ेगी. थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल गुड हेल्थ. Thank you, sir. Participants, we are closing this session now, and we'll update you on the next session very soon. Please follow us on our all social platforms. Thank you very much.